हेलो बेटा स्टूडेंट्स असी स्टार्ट की हुई है फस्ट एक्सरसाइज यूजिंग डेफिनेशन हाउ टू फाइंड द लिमिट। बेटा ये जी एक्सरसाइज है बड़ी चंगी तरह कर लो, क्योंकि अगर तुहाडी ये एक्सरसाइज होगी तो सैकेंड एक्सरसाइज भी तुहाडी बहुत जल्दी हो जानी आ। तो उस तो बाद जिहड़े तुहाडे सैकेंड चैप्टर के क्वेश्चन रह गए सी वो भी तुहाडे उन्हां दे सलूशन भी तुहानूं इस फस्ट एक्सरसाइज तो ही मिलने ने। सो फस्ट एक्सरसाइज है जिहड़ी तुहाडी बुक दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਮੀ ਇਨ ਦੀ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ अगर तो एग्जिस्ट कर दिया लिमिट एग्जिस्ट कर दिया देन वी हैव ओनली वन वे टू प्रूव ओनली बाय डेफिनेशन। ठीक है, ओनली बाय डेफिनेशन वी कैन प्रूव दैट कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। लेकिन अगर लिमिट किसी फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती देन असी पहला भी दसिया सी दैन उन्होंने असी बाय डेफिनेशन नहीं प्रूव कर सकते। फिर असी दो डिफरेंट इदां दे अलग पाथ लभ लांगे तो फिर असी शो करांगे अगर दो डिफरेंट पाथ तो जा रहे हैं तो आंसर भी डिफरेंट आ रहा, क्योंकि लिमिट अगर एग्जिस्ट कर दी है तो आंसर हमेशा यूनीक होएगा। लेकिन अगर तुहाडे कोल आंसर डिफरेंट पाथ नाल फॉलो करके आंसर डिफरेंट आ रहा है इट मीनस वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। Now the question is, let fxy is equal to x minus y over x plus y when x comma y is not equal to 0 0. Show that limit x approaches to 0, limit y approaches to 0, f of x y is not equal to limit y approaches to 0, limit x approaches to 0, f of x y। now देखो जेड़ा तुसी पहले क्वेश्चन किए हुए ने उत्थे असीं लिखते सी कि लिमिट x y approaches to 0 0। इसदा मतलब ये हो गया कि x y simultaneously will approach to 0 0। लेकिन these in this question first of all y will approach to 0, after that x will approach to 0, and in the right hand side की अगर असी गल करिए first of all x will approach to 0, after that y will approach to 0 means दोनों simultaneously नहीं जा रहे। x and y both are not simultaneously approaches to 0। so such type of limit is called iterative limit। मतलब पहला एक वेरिएबल जा रहा अप्रोच कर रहा 0 नूं, फिर दूजा वेरिएबल 0 नूं अप्रोच कर रहा। ठीक है, सो बड़े ईजी क्वेश्चन ने इदां दे सिंपल ने। नो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर असी लैफ्ट हैंड साइड की गल करिए तो वो लिए सब तो पहला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, सब तो पहला असी की करांगे ब्रैकेट सॉल्व करांगे। नो ब्रैकेट दे विच सानू सब तो पहला क्या गया कि वाई विल अप्रोचेस टू 0। नो अगर वाई नू अगर आप 0 नू अप्रोच कर दिए नो दिस विल बिकम एक्स माइनस 0 ओवर एक्स प्लस 0। so limit x approaches to 0, x over x which is equal to 1। so left hand side is equal to 1, left hand side not left hand limit। now if we will talk about right hand side, now in the right hand side first of all x will approach to 0, after that y will approach to 0, because first of all we will solve the brackets। now limit x approaches to 0, x minus y, x plus y। now if x will approach to 0, so
this will become 0 minus 1 over 0 plus 1, 0 minus y over 0 plus y. Limit y approaches to 0, minus y over y, cancel y, so we will get minus 1. So left hand side is 1 and right hand side is minus 1, therefore left hand side is not equal to right hand side. Hence, this iterative limit is not equal to this one. Now next question is, if f of xy is equal to x cube minus y cube over x cube plus y cube, where xy is not equal to 0, 0, then we are to show that two iterative limits exist. Iterative limits, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ previous question 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, two iterative limits. Two iterative limits means this was the first iterative limit. First of all, y will approach to 0, after that x will approach to 0. One of the iterative limit, and second one is when x will approach to 0 first, after that y will approach to 0. So we are to show that these two iterative limits exist. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿਮਟ 1 ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ -1 ਆ ਰਹੀ ਸੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਟਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਟ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬੋਥ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਟਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਟਰੇਟਿਵ ਲਿਮਟ ਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, f of x y means limit x comma y approach to 0 0 x minus y over x plus y. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ there is only one way to prove, that is by definition. ਓਕੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਥ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਭਣੀ ਆ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਆ, ਦੈਨ ਇਨ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ. ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਜਾਂ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦੈਨ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਲਿਮਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ. ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, obviously we are to find the different paths. Now ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ x plus y given ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਅਲ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, x ਤੇ y ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, then we will take y is equal to mx. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ mx ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਡਿਗਰੀ ਫਿਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ x plus y ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, then we will let, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ x plus y ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, then we will take y ਸਕੁਅਰ is equal to mx, so that ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ y ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ mx ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, x plus y ਸਕੁਅਰ, y ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ mx, then we can take x common. ਓਕੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ x ਸਕੁਅਰ plus y ਸਕੁਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, then we will take y is equal to mx. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜੇ x ਸਕੁਅਰ plus y, then we will take y is equal to mx square. Y is equal to mx square.
अगर तुहाडे कोल आ जाए एक्स प्लस वाई क्यू दैन वी विल लेट वाई क्यू इज इक्वल टू एम एक्स। सो इदा करके ठीक है वी विल ट्राई टू मेक द इक्वेशन होमोजीनियस। ओके सो बिकॉज ऑलरेडी तुहाडे कोल एक्स प्लस वाई दोनों की डिग्री इक्वल आ वी विल टेक वाई इज इक्वल टू एम एक्स। नाउ एज क्योंकि देखो जो असी वाई की वैल्यू हूँ पुट कर देनी है एम एक्स तो वेरीएबल तो ओनली एक्स रह गया ना, फिर हमने 2 वेरीएबल की लिमिट तो रही नहीं, तुहाडे कोल 1 वेरीएबल च कन्वर्ट हो जाना। नाउ एज वाई अप्रोचेस टू 0 एक्स विल अप्रोच टू 0, क्योंकि अगर वाई नू 0 करता तो एक्स ऑटोमैटिकली 0 हो जाएगा। देयरफॉर उन्हें जिथे तुहाडे कोल 2 वेरीएबल सी हुण किहड़े ओनली इक्को ही वेरीएबल है गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। हुण असीं वाई अप्रोचेस टू 0 नहीं लिखांगे, वी विल राइट ओनली एक्स अप्रोचेस टू 0। एक्स माइनस वाई नू असीं ऑलरेडी एम एक्स सबस्टिट्यूट करता, एक्स प्लस एम एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 टेकिंग एक्स कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर 1 माइनस एम ओवर 1 प्लस एम। सो 1 माइनस एम ओवर 1 प्लस एम। नाउ देयरफॉर दिस लिमिट विल डिपेंड अपॉन एम। तो एम की वैल्यू तो यूनीक नहीं है बिकॉज एम इज द पैरामीटर। y इज इक्वल टू 1x भी हो सकता, y इज इक्वल टू 2x भी हो सकता, y इज इक्वल टू 3x। दिस सो वी विल राइट इट हेयर डिपेंड्स अपॉन m। सो इट मीन्स दिस लिमिट विल डिपेंड अपॉन पाथ, मीन्स पाथ ते डिपेंड करती है। सो इट मीन्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये तो असी तुहाडी ये वाले क्वेश्चन की अगर मैं गल करा ये तो असी इटरेटिव लिमिट, दिस इज आल्सो इटरेटिव लिमिट एंड दिस वाज दी साइमल्टेनियस लिमिट। सो जेड़ा तुहाडे कोल नैक्सट क्वेश्चन आ उहदे विच भी असी यही करना, वी आर टू शो दैट कि 2 इटरेटिव लिमिट एग्जिस्ट करदियां ने बट साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो साइमल्टेनियस जिद्दां हुण एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ दैन वी विल लेट, क्योंकि पावर तो ऑलरेडी इक्वल आ, अगर तुहाडे कोल इत्थे हुंदा एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई क्यूब दैन वी विल लेट वाई क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स। तो फिर असी की लेट करांगे वाई क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल असी क्वेश्चन की अगर गल करिए तो iterative limits। now limit first iterative limit is limit x approaches to 0 limit y approaches to 0 f of x y। so this is limit x approaches to 0 limit y approaches to 0 f of x y is what x cube minus y cube over x cube plus y cube। now let y is approaches to 0, this will become x cube minus 0 over x cube plus 0। limit x approaches to 0 limit y approaches to 0, this is x cube over x cube which is equal to 1, so total answer is 1। now this is the first iterative limit and if we will talk about second iterative limit, limit y approaches to 0 limit x approaches to 0 f of x y which is equal to limit y approaches to 0 limit x approaches to 0 x cube minus y cube over x cube plus y cube। now 0 minus y cube 0 plus y cube minus y cube over y cube which is equal to minus 1, so we will get minus 1। so it means both the iterative limits exist, whether they are equal or unequal that is the different matter, but the iterative limits exist। now we are to show that the simultaneous limit does not exist। now limit x approaches x comma y approaches to 0 f of x y means x cube minus y cube over x cube plus y cube। again degree of numerator is equal to degree of denominator, it means limit
does not exist. So it means we are to find the different paths. So we will take y is equal to mx. As x approaches to 0, y will approach to 0. So this will become limit x approaches to 0, x cube minus m cube x cube over x cube plus m cube x cube. Now limit x approaches to 0, taking x cube common, 1 minus m cube divided by taking x cube common from the denominator, 1 plus m cube. Now limit x approaches to 0, we will get 1 minus m cube over 1 plus m cube. This depends upon m. Now this depends upon m. So it means the simultaneous limit will depend upon the path. So it means limit does not exist. Now next question is, if fxy is equal to x square y square over x square y square plus x minus y whole square, we are to again show that the iterative limits, or we can say that repeated limits. Iterative limits ਨੂੰ ਅਸੀਂ students repeated limit ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ. We are to show that the repeated limits at 0 0 exist and are equal. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਨੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ both are unequal, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਬਟ ਦੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਐਟ 0 0 ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. Now first of all, अगर असी repeated limit की गल करिए और iterative limit, limit x approaches to 0, limit y approaches to 0, f of x y. So which is limit x approaches to 0? Limit y approaches to 0, x square y square over x square y square plus x minus y whole square. Now first of all, we will let y approaches to 0. Numerator will become 0, denominator is 0 plus x square. So which is equal to limit x approaches to 0, 0 over x square 0, which is equal to 0. So अगर असी एक iterative limit की गल करिए वो तो कोल 0 आ गई. Now second iterative limit, limit y approaches to 0, limit x approaches to 0, f of x y. So which is equal to limit y approaches to 0, limit x approaches to 0, x square y square over x square y square plus x minus y whole square. Again, now we will let x approaches to 0 first. This will become 0 over 0 plus y square. So this again is equal to, this will again equal to 0. So repeated limit exists but also equal. But now we are to prove that, the simultaneous limit does not exist. Now let limit x comma y approaches to 0 0, f of x y. Limit x comma y approaches to 0 0, x square y square over x square y square plus x minus y whole square. Now take y is equal to mx. As x will approach to 0, y will also approach to 0. So therefore this is equal to limit x approaches to 0, x square m square x square divided by m square x to the power 4 plus x minus mx whole square. Now limit x approaches to 0, which is m square x to the power 4 divided by
taking common x square from the numerator, m square x to the power 4 plus x square 1 minus m whole square. Limit x approaches to 0, taking x square common, m square x square divided by taking common x square from the denominator, m square x square plus 1 minus m whole square. Now cancel x square. Now look at carefully, this is very important step. Now limit is not unique. देखो अगर तो m की वैल्यू if m is equal to 1, if m is equal to 1 then this will become 0, 1 minus 1 0, and we will get m square x square over m square x square which is equal to m square x square over m square x square, है ना. So which is 1, means if m is equal to 1 then this limit is equal to 1. लेकिन if m is not equal to 1, अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं है then this limit will equal to 0, because this is 0 plus something non zero number, क्योंकि m तो 1 नहीं है. So this limit will become 0. So again we can say that this limit depends upon path, क्योंकि अगर m की वैल्यू 1 है then limit is equal to 1, and if m is not equal to 1 means 2 3 then limit is equal to 0. So therefore limit depends upon m, depends upon m, means limit is not unique. So therefore we can say that the simultaneous limit does not exist. तो बेटा सारे क्वेश्चन तुसी करने ने इस एक्सरसाइज दे, ते अगर तुहाडे कोल कोई डाउट है then send me on WhatsApp.